तुम ऐसा कर नहीं सकते और ऐसा अभी मरते हैं हम, जीने का ताना फिर न देना तुम। अभी मरते हैं हम, जीने का ताना फिर न देना तुम। ये ताना उनको देना जिनसे ऐसा हो नहीं सकता। इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। मुस्तर खैराबादी, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। और दमे आखिर मेरी बाली पे मजमा है हसीनों का। नदीर साहब ये शेर जरा, दमे आखिर मेरी बाली पे मजमा है हसीनों का। अरे फरिश्ता मौत का फिर आए, पर्दा हो नहीं सकता। और मजाज ने इनके इसी मौजू पे क्या कहा है कि मौत भी इसलिए गवारा है, मौत आता नहीं है, आती है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को उर्दू से इतनी मोहब्बत है कि यहाँ पे इस वक्त सब काम छोड़ के और अपनी सब मसरूफियात को बालाए तर करके यहाँ पे आए हैं। And I'm feeling so deeply moved by it because it's obviously the love for the language and the culture and the context in which that language has been used. That fikr that goes with our language is really the heart and soul behind its depth and its profundity. And that's what I find so fantastically thought-provoking, that Urdu poetry makes you think about basically the most debated questions, the essential mysteries of life, the asrar-e-azal. I don't think anyone has addressed them as well as our Urdu poets. I'd like to recite a very difficult Ghalib sher to make my point. हूँ गर्मिये निशाते तसव्वुर से नगमा संज। गालिब, हूँ गर्मिये निशाते तसव्वुर। My imagination, the ecstasy of that world in which I live in my imagination is what is bringing me this absolute and sheer joy. Nishad. Nishad is very hard to translate because it doesn't just mean happiness, it means so much more. मैं से गरज निशात है किस रूसिया को, हर गूना एक गूना बेखुदी हमें दिन रात चाहिए. I mean, here the word nishad is used in a most beautiful context, but with a little differently. Here what is Ghalib saying? हूँ गर्मी निशाते तसव्वुर से नगमा संज. मैं जो गा रहा हूँ इस वक्त वो कोई रियलिटी नहीं है, वो मेरी सिर्फ तसव्वुर की दुनिया है. हूँ गर्मी निशाते तसव्वुर से नगमा संज. मैं अंदलीबे गुलशने ना आफरीदा हूँ. मैं तो उस गुलशन, उस बाग, उस गार्डन की बर्ड हूँ जो अभी तक आए ही नहीं है, सिर्फ तखय्युल में है, वो रियलिटी में आए ही नहीं है. So these are the things that make you think very seriously about issues like during Ghalib's time. The situation in Delhi was so horrifying that during 1858, घुटनों खून खड़ा हुआ था दिल्ली में. And yet गालिब की शोखी, उनकी ओरिजिनलिटी, उनकी क्रिएटिविटी बदस्तूर जारी थी उस जमाने में भी. So what was happening outside had little to do with his internal life, which was so rich. And that's why he could sing the most
the most joyous and the most, I would say, somehow lofty uh, and thought-provoking ideas that he could convey to us in fabulous language only because of what was happening in his mind. That was disconnected. And so whenever I get very anxious about, I'm an oncologist, I see a lot of tragedy every day, I remind myself of things like this, that I need to change my internal life and how I'm reacting to this, rather than allowing the external things to dictate to me. And Khalid is my biggest teacher in this. How many times has he come to us with ideas that you never thought one could express in 2 lines, and here he is. हूँ गर्मी निशाते तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंदलीब गुलशन ना आफरीदा. So beautiful. And here's another rather difficult shade, then we can end with a ghazal and